علی علی او بھائی علی علی بھلی صاحب میری طرف اٹینڈ کیا کر رہے؟ یہ لا پیش ہو چکا ہے ہاؤس میں، تو آپ نے میرے سے سائن نہیں لینا ہوتا جانے سے پہلے؟ نہیں، جب یہ ہاؤس میں لے ہوتا ہے تو isn't the speaker to be informed for the law؟ سر ایک سیکنڈ پلیز. نہیں بٹ has the speaker to be brought into loop on files؟ I don't know it. I take a very serious objection to this. آپ نے جو بات کی ہے ویسے میرے لیے it is not to my knowledge at all, but this media report جو آپ نے مجھے بھیجی ہے، میں اس میڈیا رپورٹ کو پڑھنے کے بعد اس لا کے اعتبار سے میں لا دیکھوں گا تو پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے کہ مس رپورٹ نہ ہو. ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ 1871 کے دور کا قانون بحال کیا جائے. وہ تو نوآبادیاتی نظام کا قانون تھا. اب میرا نہیں خیال کچھ مس رپورٹ ہو سکتا ہے. یہ قانون اس شکل میں جیسے اس اخبار کے تراشے میں ہے، اس کالم میں ہے، اس شکل میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو 1959 میں گنڈا ایکٹ کے قانون کو ایوب خان نے میجسٹریٹ کے ساتھ، اور 1781 میں برٹش راج میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹرائبلز پورے ٹرائب کو کرمنلائز کرتے تھے، تو ان کو انڈیویجول پہ جانے کی تو انگلینڈ کی لا رپورٹ کمیٹی نے کلونیل ٹائم میں اجازت نہیں دی تھی. کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے دیر از سم مس انڈرسٹینڈنگ ان دس. لیٹ می سی، مجھے پتہ نہیں ہے. ویری اتھینٹک نیوز پیپر، اور وہ ایسے خبر نہیں ہے. نہیں مجھے نہیں پتا. میں نے آپ کو ڈیٹیل بھیجی ہے. مجھے ڈان کی گو تھرو دیٹ. مجھے یو کین گیٹ اے کاپی آف دیٹ رپورٹ. ہاؤس سے ہو کے آئی ہے کمیٹی. اگر آپ دیکھ لیں گے تو ٹھیک ہو جائے. جی ٹھیک. مجھے لیٹ می گو تھرو اٹ. اس سے پہلے بات کرنا نہیں دیکھیں، میں نے اسمبلی سیکریٹریٹ سے پوچھا ہے تو ابھی تو پہلے ہاؤس میں لے ہوگا تو پھر آگے جائے گا. اسٹینڈنگ کمیٹی میں پہلے کیسے جا سکتا ہے؟ علی او بھائی علی بھلی صاحب میری طرف اٹینڈ کیا کر رہے؟ یہ لا پیش ہو چکا ہے ہاؤس میں، تو آپ نے میرے سے سائن نہیں لینا ہوتا جانے سے پہلے؟ نہیں، جب یہ ہاؤس میں لے ہوتا ہے تو isn't the speaker to be informed for the law؟ سر ایک سیکنڈ پلیز. نہیں بٹ has the speaker to be brought into loop on files؟ I don't know it. I take a very serious objection to this. میں دیکھ لیتا آپ ہوں. سر اس کو دیکھیں. یہ سب میرے بھائی جو ادھر بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، یہ آپ نے ابھی خود ہی کہا ہے کہ یہ تو ایک چھوٹے سے ایکٹ پہ پھنس جائیں گے. آپ نے اس کا رواج دیا ہے کہ 1908 مجھے رانا صاحب، کیونکہ میں نے ابھی ان کو یہ اسمبلی سیکریٹریٹ کو سیریس کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ اگر بل چاہے وہ اپوزیشن ممبر کا ہے یا گورنمنٹ کا ہے، مجھے آپ نے اس کو دینا تو ہے نا. میری نظر سے گزرا ہی نہیں ہے. لیٹ می چیک اٹ. کاغذ گزرا ہے میری نظر سے. وہ ہے، یہ ہے یہ ہم نے نا ایک نیا آپ لا لا رہے ہیں وچ از ویری، میرا خیال ایمبیشیس بھی ہے اور بڑا نقصان دہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ such habitual offenders anti-social behavior. سر اس میں دیکھا which may be interpreted differently by different authorities. Such ambiguity opens the doors to selective application against political workers, journalists, protesters, trade unions, and other citizens. Sir, then second is the excessive powers given to the police in this. The legislation significantly expands police powers, including digital monitoring, biometric collection, and preventive surveillance. Without independent judicial oversight, these powers risk abuse and violate constitutional rights to privacy. Sir, second is, agar constitution mein aap dekhein, I would like to draw your attention to the article, sir, that is Article 8, fundamental rights. Laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights to be void. اس میں آپ دیکھ لیں سر. Secondly, sir, Article 4, right to be treated in accordance with law.
Article 9, security of person. Article 10, right to a fair trial. Article 14, dignity of a man and privacy. Then comes Article 19, freedom of expression. Sir, the Assembly must ensure the crime control does not come at the cost of constitutional freedom, sir. Sir, देखिए, financial punishment before final conviction, the proposed freezing of bank accounts and blocking of CNIs can deprive individuals and their families of basic means of survival. Such measures should only follow a final judicial determination and not become an administrative, sir, ये punishment, sir. Sir, मैं आपको कह रहा हूं सर कि risk of political victimization इसमें आ रहा है सर. देखें, Punjab has a history where extraordinary laws have been occasionally been used against political opponents. Without strong safeguards, this bill could become another tool to suppress dissent instead of fighting original organized crime. Sir, फिर आता है 6 में मैं कह रहा हूं, I pose कि existing laws already cover most offenses: extortion, intimidation, aerial firing, impersonation, cyber offenses and organized crimes are already punishable under the Pakistan Penal Code, Code of Criminal Procedure and the Prevention of Electronic Crimes Act. Instead of creating another sweeping law, the government should strengthen the investigation, prosecution and conviction, sir. Sir, there is no independent oversight in this. The bill lacks robust mechanism for parliamentary, judicial or independent review of surveillance orders and preventive actions. Extraordinary powers require extraordinary. Sir, this is misplaced authority. The government claims to be strengthening the rule of law to face. So then you will have the weak public health care, rising inflation and all this. Sir, अब जब ये लॉ ले आएंगे, where lies the sanctity? अगर हम लोग महफूज नहीं होंगे, अगर ये असेंबली ये लॉ पास करेगी, we are already आप है उसके आपके टारगेट पे. मगर ये ना करें, वक्त बदल जाएगा. ये लॉ को अपोज करें. आपने ये कमेटी को ले गए हैं. ये इस लॉ का नाम क्या? इसका सर मैं आपको नाम एग्जैक्ट बताता हूँ सर. इसका नाम है सर, this is called the new law to be called Punjab's Control of Habitual Offenders and Anti-Social Behavior Bill 2026. सर आप देखें 78 years ago जब ये पाकिस्तान का था, जब आपने you must have read that गुंडा एक्ट आया था, सब चीजें आई हैं सर. दिस इज ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन. मैं अपने अक्रॉस द फ्लोर जो बैठे हैं उनको भी कहूंगा, ये लॉ जो है ना, लॉ जो बना रहे हैं, ये ना करें रूल्स और फूल्स, वाइव देम ब्रेक देम. मैं सर आपको बड़े दुखी दिल से कह रहा हूं कि हमारी आने वाली नस्लें, एवरीबडी विल बी इन टारगेट. आप किसी को चाहेंगे, आपको कह देगा, मैं कह दूंगा कि मलिक अहमद खान साहब मेरे बेटे ये यूज्ड अब्यूसिव लैंग्वेज, एक एविडेंस बना के आपको सजा दे देंगे. सर ये ना करें. बट द क्वेश्चन विल रिमेन. वैसे तो भी ये लॉ आया नहीं है. हम सर मैं प्रिकॉशनरी बता रहा हूँ ना, आ गया सर, कमेटी से होके आ गया है. It's been laid. सर यही तो मैं कह रहा हूँ. मैं तो कह रहा हूँ कि एनी लॉ which is against the fundamental principles of justice. मैं कल किसी मीटिंग की वजह से यहाँ था नहीं, तो फिर डिप्टी सर हम बड़े उदास रहे हैं आपके बगैर. डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करते रहे. Because sir, you are fighting for the rule of law, and we all stand with you for the rule of law. मेरा ये मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, जो क्योंकि आपने बात, जाहिर सी बात है, जरूरी होगी तो आप कर रहे हैं, कि ये जो लॉ है, आपकी गुफ्तगू से जो मैं अखज कर सका हूँ कि इस कानून के तहत आप ये फरमा रहे हैं कि एंटी सोशल बिहेवियर, जी सर, तो अदालत डिटरमिन करती है. जी सर. ऐसा नहीं, आप इसको जरा ना, मैं इफ आई गिव यू, ये अगर कल देखे ना, कल डॉन में लिखा हुआ है वेरी डिटेल आर्टिकल. ये मुनासिब नहीं मैं सारा पढ़ दूं आपको. ये मुझे भिजवा दें. मैं आपको इसकी कॉपी रान साहब से लें, इसकी कॉपी करा के मुझे दें, मैं फिर आपको दोबारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर देता हूँ. ठीक है सर, लेट मी गो थ्रू इट. क्योंकि देखिए ना, कोई भी जो कॉमन सेंस है, जो अकली बुनियाद पे जिस कसौटी पे परखा जा सकता है, तो वो तो ये है कि अगर आपने कोई ये डिटरमिन करना है, इवन जो गुंडा एक्ट था आपने जिसका भी जिक्र किया,
even the act which is for undesirable persons, जो border area का act है, उसका जो section 11 है, जी ये सारे कवानीन अदालत तय करती है कि कौन अनडिजायरेबल है. लेट्स से somebody is a smuggler and he lives in a border area, तो कोर्ट डिटरमिन करती है कि दिस मैन शुड नॉट बी अलाउड टू लिव अंडर द बॉर्डर एरिया रेगुलेशन ऑफ 1969 इन दिस बॉर्डर एरिया. दो अब वो नेचर चेंज हो गया है. जी राणा साहब, आपके इल्म में है ये कानून? राणा अरशद साहब, चीफ विप साहब, फिर पूछते रहिए जी. नहीं सर, बिल्कुल इल्म में है. वो प्रोसीजर के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी में आया है, वहां पर मेंबरान ने अपनी राय दी है और उसके बाद जो जो उनकी राय थी सर उसके मुताबिक रिकमेंडेशन आई है. राणा साहब ये कह रहे हैं कि आप डीसी और डीपीओ को ये इख्तियार देंगे कि वो ये तय कर दें कि किस शख्स को कौन शख्स डिजायरेबल नहीं है. तो आप ये इख्तियार दे रहे हैं, वाकई दे रहे हैं? सर ऐसे ही है, लेकिन सर उसका चलिए, ठीक है. ऑलमोस्ट पहले भी डीसी ही, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि वो ये कह रहे हैं.